Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English year number 5, page number 50 and 51, exercise grammar. Students, now let us start topic degrees of adjectives. There are 3 degrees of adjectives which are positive. It is the primary degree of an adjective which denotes the quality of a subject without any comparison. Next, comparative. This degree is used to compare two subjects. Next, superlative. This degree is used to compare more than two subjects. Next topic, regular and irregular adjectives. Regular adjective. Regular adjectives change their form, comparative and superlative, by adding er, or est, or more, or most. For example, short, shorter, shortest. Next, irregular adjective. Irregular adjectives do not change their form by adding er or est or more or most. For example, well, better, the best. Next topic is degrees of regular adjectives. इसमें फर्स्ट वर्ड है अगली, कंपेरेटिव डिग्री अगलियर, सुपरलेटिव डिग्री अगलिएस्ट. नेक्स्ट वर्ड है शार्प, कंपेरेटिव डिग्री शार्पर, सुपरलेटिव डिग्री शार्पेस्ट. नेक्स्ट वर्ड है लो, कंपेरेटिव डिग्री लोअर, सुपरलेटिव डिग्री लोएस्ट. नेक्स्ट पेज नंबर 51. नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ इरेगुलर एडजेक्टिव्स. इसमें फर्स्ट वर्ड है मैनी, कंपेरेटिव डिग्री मोर, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट. नेक्स्ट वर्ड है फार, कंपेरेटिव डिग्री फर्दर, सुपरलेटिव डिग्री फर्थेस्ट. नेक्स्ट वर्ड है बैड, कंपेरेटिव डिग्री वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.